mediation and OIC reforms were adopted. There were 20 resolutions which were co-sponsored or sponsored by Pakistan. These included resolutions on Jammu and Kashmir, arms control, peace and security in South Asia, UN Security Council reform, Muslim minorities, situation in Afghanistan, Islamophobia, countering terrorism, illicit financial flows, combating corruption, COVID-19 response, and Pakistan's 75th anniversary celebrations. Now, in terms of key outcomes, let me give you a perspective for Pakistan. Jammu and Kashmir dispute, you know that this is a key focus for Pakistan at the OIC. Let me give you 8 indicators to let you understand the importance and significance of the outcomes of this conference. Number 1, unanimous adoption of a forceful resolution on Jammu and Kashmir dispute. Number 2, robust advocacy by the Prime Minister and the Foreign Minister. You listen to their statements. Number 3, strong expressions of support and solidarity in statements by the OIC Secretary General, Saudi Arabia, Niger, Asian, Arab and African groups, China. You all listened to their statements in the inaugural session, plus statements by OIC members, one after the other, in the closed working sessions. Number 4, adoption of a comprehensive joint communique by the Jammu and Kashmir Contact Group. Number 5, action plan by the Contact Group and its approval by the CFM. Number 6, presentation of visit reports by the OIC Special Envoy on Jammu and Kashmir, IPHRC, and the Assistant Secretary General of OIC for Humanitarian Affairs, all related to the situation in IIOJK. Strong reiteration of solidarity and support in the Islamabad Declaration on the question of Kashmir. Number 8, endorsement of Pakistan's position on legal, diplomatic, human rights, humanitarian, and peace and security dimensions of the Jammu and Kashmir issue. Let me highlight for you the OIC resolution on Jammu and Kashmir, its key elements. It contained a strong expression of support and solidarity with the Kashmiri people, their inalienable right to self-determination, and rejection of Indian attempts to equate their just cause with terrorism. An emphasis that the question of Jammu and Kashmir is of utmost importance for the Muslim Ummah and required a unified position from member states at international fora. Robust endorsement of support for settlement of the dispute in accordance with the UNSC resolutions, its final disposition under the UN-supervised plebiscite, and the indispensability of its just settlement for durable peace in South Asia. Very important, a reiteration of rejection of India's unilateral and illegal actions since 5th August 2019 and the demand from India to reverse those actions, including demographic changes. It also deplores and condemns human rights violations in IIOJK and calls for issuance of updated report by the UN High Commissioner for Human Rights. The other significant meeting was that of OIC Contact Group on Jammu and Kashmir. Let me give you some of the highlights. A ministerial meeting of the OIC Contact Group on Jammu and Kashmir was held on the sidelines of the session. This was the 6th meeting of the Contact Group since 5th August 2019. The group adopted a comprehensive joint communique that articulates OIC's unified position on the human rights, humanitarian, peace and security, and legal dimensions of the Jammu and Kashmir dispute. The group also adopted a forward-looking plan of action on Jammu and Kashmir outlining measures and activities by OIC member states, the Contact Group, the OIC Secretary General and OIC Secretariat, the OIC's Human Rights Commission,
and the OIC Special Envoy on Jammu and Kashmir, how they are going to advance the Kashmir cause in the coming weeks and months. The group also received reports on the visits of Secretary General Special Envoy for Jammu and Kashmir and the Assistant Secretary General for Humanitarian Affairs, besides the report of the OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Now, on the situation in Afghanistan, some of the highlights from this session. There was presentation of a report by the OIC Secretary General Special Envoy on Afghanistan to the CFM on progress achieved on decisions reached at the December 21 extraordinary session. The OIC Humanitarian Trust Fund was operationalized during the CFM. The charter of the fund was signed by the OIC Secretary General and the President of Islamic Development Bank on 21st March in the presence of the Foreign Minister. There was adoption of a comprehensive resolution on Afghanistan covering political, security, humanitarian, and economic aspects, and this resolution was sponsored by Pakistan. On Islamophobia and related subjects, some of the highlights. Adoption of a comprehensive resolution on Islamophobia with substantial inputs by Pakistan. The CFM decision to appoint OIC Special Envoy on Islamophobia to lead collective efforts on the organization's behalf. Welcoming of the unanimous adoption of UN General Assembly resolution proclaiming 15th March as International Day to Combat Islamophobia. This process, as you know, was led by Pakistan since the 47th CFM in Niamey, Niger. दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग आप मुलाहिजा कर रहे थे। इजलास में मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस का अहाता किया गया। ये कहना है तर्जमान दफ्तर खारजा का। उन्होंने कहा कि 140 करारदादें मंजूर की गईं। इस्लामाबाद में OIC का इनेकाद संगे मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए ptv.com.pk। देखते रहिए PTV न्यूज़। साइन पूरी दुनिया में देखा जा रहा था। वो एक पॉजिटिव एग्रीमेंट साइन करने जा रहे थे, ये कुछ इस टाइप की न्यूज़ जी हाँ, वो बिल्कुल हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे जो है ये वॉलेटाइल सिचुएशन है और हमें प्राइसेस में भी वॉलेटिलिटी जो है वो हमें नजर आएगी। तो इट इज नॉट ओनली दैट कि प्राइस नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, बट ये कि प्राइसेस वॉलेटाइल हैं। लाइक आप कोल की प्राइसेस देख लें तो वो 450 का लेवल टच करके अब जो आज से जो फ्यूचर ट्रेड होने शुरू हुआ है अप्रैल का, वो अराउंड 270-275 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि प्राइसेस सेटल कहाँ पे होंगी। डायरेक्शन लेस हैं इस वक्त चीज़ें वॉलेटिलिटी की वजह से। राइट अगर ऑल्दो हमारे पास ईरान या इधर से जो है वो कुछ कुशन मिल जाए, सैंक्शंस वगैरह हट जाएं, तो यहाँ से बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है यहाँ से। और वो जो सप्लाई डिमांड वाला जो सिनेरियो होगा वो मार्केट प्राइसेस को और इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस को वो फिर डिटरमिन करेगा। राइट अच्छा इसके साथ साथ अगर लोकल मार्केट को देखें थोड़ा सा, क्या इम्पैक्ट ले रहे हैं ग्लोबली चेंजेस का डेली बेसिस पे? क्योंकि इन्फ्लेशन एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है चीज़ों से जब हम जो है वो इम्प्लीमेंट करने के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनली जब डेली चेंजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान में आप इन्फ्लेशन को कहाँ देख रहे हैं? देखें इन्फ्लेशन इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं पे भी संभल तो नहीं रहा, हर जगह पे एक अपवर्ड ट्रेंड नहीं चल रहा है। तो पाकिस्तान भी क्योंकि हम लोग अपनी इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर इन द प्रोसेस। हम जा रहे हैं बट उस जगह तक पहुंचने में हमें टाइम लगेगा। तो जब तक वो नहीं होगा हमारे पास भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल है, बिकॉज अगर इंटरनेशनली अच्छा हमने इन हाउस बड़े सारे मेजर्स लिए हुए, बड़े चीज़ों को कैलकुलेट करके चीज़ों को अलाइन किया हुआ है। बिल्कुल देखें इन हाउस तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो हमारे अपने इख्तियार में है, बट इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस अगर अपवर्ड ट्रेंड में है तो वो हमारे इख्तियार में नहीं है।
लाइक हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं और हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑयल प्राइसेस अगर $150 या $200 जस्ट सपोज कि अगर वहां तक जाती हैं तो उसका तो हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट आना है, और जो कि हमारे इख्तियार में भी नहीं है। फिर हम डोमेस्टिकली कितने भी मेजर्स ले लें, लेकिन वो चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर वो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हुई हुई है जिसके हम कोई भी मेजर्स नहीं ले सकते, तो वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल फिर वो एक अलग डिबेट हो जाएगी कि हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता, ऑयल यूजेज कम होती, हम इंपोर्ट कम बनाते हैं, बहुत सारे फिर वो बोलते ना इफ और बिल्कुल वो इफ एंड बट्स अगर वो फिर आ जाएंगे, लेकिन वो चीजें फिर भी हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। राइट यही एग्जैक्टली। अच्छा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। क्या ओवरऑल अब जो टेक्निकल टर्म्स में बात करें 43,500 से अबव आज का क्लोजर है इस वीक के अंदर, और खासकर आने वाले दिनों में नियर फ्यूचर की बात कर लेते हैं 2-3 मंथ्स, कहाँ देख रहे हैं मार्केट के नंबर्स और कहाँ देख रहे हैं मार्केट की जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ना इन्वेस्टर्स का वो? आई थिंक कि ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इस वक्त मार्केट के अंदर है, ये अगर चीज़ क्लियर होगी तो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगी और ऑटोमेटिकली मतलब हमें चीज़ें बेहतर ऊपर जाती हुई नजर आएंगी, जो कि मार्केट ने एक ट्रेंड बनाया भी था बीच में, बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल नॉइज वो चीज़ सस्टेन नहीं कर पाई। इस वजह से आप देखें कि बीच में 2-3 स्पेल्स ऐसे आए हैं जिसमें मार्केट हमने ऊपर की तरफ जाते हुए देखी है, लेकिन आफ्टर अ डे और 2 वो मार्केट वहां से दोबारा नीचे आ गई है। राइट, बिकॉज जिस तरीके का आपका पॉलिटिकल सीन है, सूनर और लेटर इसने खत्म हो ही जाना है, लाइक 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता या 10 दिन, उसके बाद चीजें। लेकिन लोग ये भी तो थोड़ा सा एक ऑप्टिमिस्टिक तो है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्यूरियस भी है कि होगा क्या। अब अगर चीजें अगर थोड़ी सी मेस अप हो जाए तो उसके भी थोड़े से रिपरकशंस है जो मार्केट भुगतेगी। ऑब्वियसली मार्केट हमेशा से यहाँ पे कोई डिसीजन नेगेटिव हो जाता है या फिर अगेंस्ट हो जाता है तो मार्केट बहुत ज्यादा जो है ना उसको सेंटिमेंट्स दिखाती है। लेकिन मेरे ख्याल में अब जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही है, यहाँ से अगर आप देखें तो चीजों में नीचे जाने का रूम बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए